Assalamu alaikum everyone, and a very good evening to all of you. This is Ammaar bin Saleem and I represent the Office of Advancement at LUMS. Again, very warm welcome to all of you, to all of those people who are listening to us. Hoping you're enjoying your day. As all of you would know, we have launched numerous MS programs through the Sulaiman Dawood School of Business at LUMS, and amongst many great things about these programs, the best is that you get to study at the best business school in Pakistan, and that is Sulaiman Dawood School of Business. And as many of you would already know, SDSB is Pakistan's first and the only business school to have scored the AACSB accreditation, an accolade that actually clubs us with the top 5% of the world's best business schools. So today we are actually here on Radio LUMS, another episode of Radio LUMS. And before I introduce my guest to you today, let me just brief you a bit about the schedule of the Radio LUMS programs that we're doing for these different MS programs being offered at SDSB. Today, inshallah, we'll be talking about the MS Accounting and Analytics program. Tomorrow, we're going to see you for MS Financial Management program. Then we'll connect with you for MS Technology Management and Entrepreneurship program. And then MS Business and Public Policy. Then you will see us again for MS Supply Chain and Retail Management. And then MS Healthcare Management and Innovation program. So I hope that you guys are going to join us for all of these sessions. Make sure you are there. And as I've mentioned, today we'll talk about the MS Accounting and Analytics program. I am sure आप सबने guess कर लिया होगा हमारे guest Dr. Omair Haroon. Dr. Omair, welcome to the show. Thank you very much, Ammaar, and thank you for everyone for joining us. Thank you so much, Dr. Omair. First question, very important one. How was the weekend? The weekend has been hectic because we all know these programs, some of these MS programs are weekend-based. Oh, yes. So I'm working 7 days a week these days. And last time I remember when I met you at SDSB, you were telling me that you were teaching more courses on weekends as compared to the weekdays. Right, because 3 of our new MS programs are on weekends. Our executive MBA program is on weekend. I see. So quite a bit of workload on the weekends now. I'm sure. अच्छा डॉक्टर उमैर, हमने पिछले 2 से 3 साल के अंदर मल्टीपल एमएस प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं. एमएस अकाउंटिंग एंड एनालिटिक्स प्रोग्राम मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप प्लीज़ इंट्रोड्यूस करवाएं, बट ऑल्सो इंट्रोडक्शन के साथ साथ व्हाट वाज द नीड behind the introduction of the MS Accounting and Analytics program? Right. So I am a chartered accountant from Institute of Chartered Accountants of Pakistan as well. Mm-hmm. So I keep in touch with the industry and practice of accounting in Pakistan. Problem हमारे पास ये है कि our traditional accountants जो ICAP के रूट से या ACCA के रूट से accounting and finance profession में आते हैं, quite a lot of them feel a deficiency in them in terms of a few things. One being soft skills, and not so much soft skills, but skills like economics, which are not thoroughly taught in our professional accountancy program. So one is that. मतलब वो तो जैसे ये accounting का program है तो उसमें accounting ही पढ़ो. हाँ, लेकिन अब क्योंकि क्रॉस डिसिप्लिनरी काम बहुत ज़्यादा होता है, फाइनेंस और अकाउंटिंग का जो प्रोफेशन होता था वैसा नहीं है जैसा 5 साल या 10 साल पहले था. अब वी नीड टू नो मच मोर अबाउट मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स एंड HR एंड OB, विच आर नॉट ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ्स ऑफ अकाउंटेंट्स. एक तो इसको टॉप अप करना था, bring accounting professionals up to date with what's happening in these areas, so that they can work collaboratively with people from these disciplines. Economics सबको आनी चाहिए, accountants को बहुत ज़्यादा आनी चाहिए, जो हमारे traditional accountants का kind of weak point है. उसके बाद what we lack is skills in data manipulation, information systems, जो अब बहुत ज़रूरी है. आने वाले 5, 10, 15 साल जैसा हम काम करते थे, जो एक ट्रेडिशनल रोल था अकाउंटेंट्स का, वो बदल रहा है. अब जैसे वो कहते हैं कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी तो अकाउंटेंट्स की जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी. ऐसा नहीं है. द वे अकाउंटेंट्स वर्क, दैट इज़ गोइंग टू चेंज. अच्छा, ये सबसे बड़ा फेयर वैसे है लोगों के दिमाग में. मैंने भी जितने अकाउंटेंट से मिले थे, एवरीवन इज एक्चुअली मतलब अंडर द सेम क्लाउड के यार हमारी जॉब तो जाने वाली है, सो व्हाई स्टडी अकाउंटिंग. बिल्कुल ऐसे ही है. और 20 साल पहले जैसे अकाउंटेंट काम करते थे अब वैसे काम नहीं करते. इसी तरह जैसे अब अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं 5 साल बाद 10 साल बाद वैसे काम नहीं करेंगे. सो द नेचर ऑफ द वर्क इज चेंजिंग एंड क्वाइट रैपिडली. हमारा ट्रेडिशनल जो करिकुलम है अकाउंटिंग का, दैट इज़ नॉट अप टू डेट to cope up with these changes. Okay. तो दूसरा मकसद ये था कि इस प्रोग्राम को शुरू करने का कि
हमारे जो ग्रेजुएट हों वो इंडस्ट्री के अंदर जाएं, हिट द ग्राउंड रनिंग, दे हैव द स्किल्स दैट आर नीडेड, सो दे डोंट हैव टू लर्न ऑन द जॉब या एडिशनल करें. सो दिस इज द इम्पेटस फॉर MS. तो ट्रेडिशनल MS अकाउंटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि द थिंग्स आर देयर. इफ़ समबडी वांट्स टू डू स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग, पाकिस्तान में एवेन्यूज़ हैं, BCom MCom वाला है, ACCA है, ICAP है, सो वो मौजूद हैं. लेकिन ऐसे प्रोग्राम्स मौजूद नहीं है कि जो इनकी स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट करें with the skills that are going to be needed in 5-10 years from now. I see. So, Dr. Omair, we have talked about the different programs, the different skills that we'll be working on traditionally, which accountants really do not come up with. So, if I have to ask how the whole degree has been, mapped out. So, how many semesters are there? What's the teaching methodology? कौन-कौन से courses हैं that we're going to study? Economics is one, then accounting, of course, then what else? So, 3 modules हैं जो course work के हैं, so which makes around 1 year, around 4 months each. तो 1 साल आपने course work करना है, उसके अंदर 3 मॉड्यूल हैं. उसके बाद 6 माह की placement है, where the students go into the industry, or if they are working already in the corporations, they apply whatever they've learned and do a project which is supervised by faculty and of course the client or wherever they are working. Like kind of a field thesis? So it is a field thesis. Okay. So 3 मॉड्यूल्स की डिटेल ऐसे है कि मॉड्यूल 1 इज़ लाइक मिनी MBA. उसके अंदर मार्केटिंग के कोर्स है, इकोनॉमिक्स का कोर्स है, और HROB का कोर्स है, लीडरशिप का. सो ऐसी चीज़ें जो अकाउंटिंग फाइनेंस से रिलेटेड नहीं हैं लेकिन ट्रेडिशनल MBA के अंदर बहुत ज़रूरी समझी जाती हैं. तो बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली मॉड्यूल 1 के अंदर. मॉड्यूल 2 डिज़ाइन ऐसे किया गया है टू इंट्रोड्यूस पार्टिसिपेंट्स एंड द स्टूडेंट्स विद द टूल्स that are needed in practice. लेकिन वो ऐसे टूल्स हैं कि जो सिर्फ अकाउंटिंग फाइनेंस के अंदर नहीं, मार्केटिंग में, ऑपरेशंस में, कहीं भी हों, फ्यूचर में काम आएंगे. सो बेसिक स्टैटिस्टिक्स, बेसिक एनालिटिक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. So these are the courses that are useful not only in accounting and finance but anywhere. जो तीसरा मॉड्यूल है वो एप्लीकेशन है इन टूल्स की इन प्रोफेशनल सेटिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. तो हमने सेकंड मॉड्यूल में फॉर एग्जांपल एनालिटिक्स पढ़ लिया, लेकिन उसकी एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इज मॉड्यूल 3. स्टैटिस्टिक्स पढ़ लिया, उसकी एप्लीकेशन इन मॉड्यूल. MIS पढ़ लिया, उसकी एप्लीकेशन इन मॉड्यूल 3. Okay. So that is more of a specified problem solving, business problem solving in real life setting. So this is what we do in module 3. So I see. These 3 modules are all weekend based. Saturday. And I think that's the best thing about this program. Right, because we are trying to have people who are already working in industry in this area to complement their skills. Okay. उनको facilitate करने के लिए तो उसका structure ऐसा होता है typically कि हर alternate weekend classes होती हैं, एक weekend छोड़ के, और उसमें भी one time it is online and next is in person. So like a completely hybrid program. It's a hybrid program. So somebody from Islamabad or Multan or Faisalabad would have to come to the campus once or maybe twice in 1 month. यानी कि एक वीकेंड आना हुआ, एक वीकेंड आना पड़ेगा, and next weekend would be online. तो कुछ कंस्ट्रेंट्स की वजह से कुछ क्लासेस लेट्स से फ्राइडे या मंडे को भी होंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम इज वीकेंड्स, सैटरडे संडे बेस्ड, और वो भी अल्टरनेट वीकेंड्स. अच्छा डॉक्टर उमैर, if I were to consider joining the program, the accounting analytics program, my primary apprehension would have been again the way the program would have been conducted, the classes would have been conducted. So मैं ये जानना चाह रहा था कि Saturdays and Sundays are the main days on which you'll be studying. So Saturdays को कितनी classes होती हैं generally, and Sundays को कितनी होती हैं? किस दिन work pressure ज़्यादा होता है? Generally the classes start 8:30 in the morning up to 5 p.m. ठीक है. Saturdays and Sundays. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ड्यूरिंग इन बिटवीन 2 weekends, 2 studying weekends, you will not be doing anything. आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, काम मिलेगा दैट यू विल हैव टू, स्पेशली हम कोलैबोरेटिव काम, ऐसी असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स जो स्टूडेंट्स मिल के करें, सो दैट देर इज़ सम काइंड ऑफ नेटवर्किंग ऑल्सो गोइंग ऑन. वरना अगर खाली वीकेंड पे आ रहे हैं तो वो आपस में जल नहीं हो पाएंगे. Okay. तो ग्रुप बेस्ड प्रोजेक्ट्स, ग्रुप बेस्ड असाइनमेंट्स,
अब क्योंकि जूम ने ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है, सो अ प्रोजेक्ट कैन बी डन विद 3 पीपल, 1 फ्रॉम मुल्तान, 1 फैसलाबाद, 1 लाहौर, और वो कोलैबोरेटिवली कर सकते हैं। Yes. तो अब वीकेंड प्रोग्राम का ये मतलब नहीं है कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा ड्यूरिंग द वीक। डेफिनेटली आपका काम मिलते रहेंगे, बिल्कुल मिलते अच्छा, रहेंगे। एक बड़ी मजे की बात है, and I think you'll also agree because you have been teaching executive MBA. So I remember a couple of years back when we would come for on Saturdays and Sundays to take photographs and do a couple of marketing related activities for the executive MBA program. We would only see students who were just executive MBA students, and that's and the rest of the campus would be empty. Ab with the new MS executive programs, I see there are so many students who are coming to campus on weekends as well. और campus life आपको weekend पे भी नजर आ जाती है। बिल्कुल। और क्योंकि कम से कम 3 MS प्रोग्राम ऐसे हैं जो अब वीकेंड पे हो रहे हैं, और तीनों का मॉड्यूल 1 जो है वो कॉमन होता है। तो अकाउंटिंग एंड एनालिटिक्स वाले और सप्लाई चेन वाले और हेल्थ केयर मैनेजमेंट वाले, उनका भी आपस में इंटरेक्शन होता है वीकेंड्स के ऊपर। आपके नेटवर्किंग बनती है, यू गेट टू नो पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। HMI, द हेल्थ केयर मैनेजमेंट, मोस्टली हेल्थ केयर बैकग्राउंड के लोग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं। सप्लाई चेन में मोस्टली इंजीनियर्स होते हैं। सो दैट इंटरेक्शन ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट, कि आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज का, डिफरेंट फंक्शंस का, उनका इंटरेक्शन से आपको फायदा होता है। एंड दे आर all of them are मतलब in the same classroom? Yeah, in the module 1, yes. In the first module? Yeah. Okay, perfect. Dr. Omair, we've been talking about the background of the students. As you've mentioned, people from the healthcare industry will come, and then engineers would come. And then if we refer to the background that people would have in terms of the accounting and accounting analytics program, are we looking for people with certain academic background? Yes, क्योंकि again हम उनको MS accounting as such technically नहीं पढ़ा रहे। Okay. हम उनकी जो existing skills हैं उसको टॉप अप कर रहे हैं। So we presume or we expect people from accounting and finance background to be there. At least undergrad में accounting finance आपका major हो, या at least sufficient number of courses आपने किए हों. Preferably somebody who has done a professional qualification in accounting or working towards it. So ACCA या CA कर चुके हों या कर रहे हों. So that's the ideal background of people. ACCA कर रहे हों या कर चुके हों, या for example, लेकिन at least they must have at least 16 years of 16 education. years of education. I see. Degree requirement is there. Degree. And Dr. Omair, are there any requirements in terms of work experience? Requirement नहीं है, but preferable है, क्योंकि हमारे स्कूल की traditional strength ही case method रहा है. And quite a bit of classes in the master's program are also case-based, where people come in with their own ideas and especially bring their experiences into the classroom. Okay. And we call it a participant-centered learning, where participants or the students learn from each other. Okay. So instead of the instructor lecturing all the time, most of the time is students actually helping each other learn. So that's why we need people with experience. Requirement नहीं है, but preference है. Preference है. और उसमें सबसे अच्छी बात है कि अगर किसी ने मतलब काम करना भी है, so they can go and do their job during the week and then come to the program. Right. So let's say 90% of the existing MS students who are in healthcare or supply chain or accounting and analytics, they are working. So working से आपको नौकरी नहीं छोड़नी पड़ेगी, ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी. To balance studies and job and family, that's true, but I think it would be a rewarding experience. अच्छा, मैंने जितने भी प्रोफेसर साहिबान से बात की है, especially at SDSB, they do say and they take a lot of pride in it कि हाँ, we're gonna make sure your life becomes difficult over the next 1.5 years. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि one of the requirements or one of the how things are changing in industry is people need to adapt quickly to changing working environments. Employers की expectations अब बहुत फ़र्क हैं जो पहले होती थी, तो हमारे students को आदत होनी चाहिए to adapt and work hard. अच्छा डॉक्टर उमैर, हम बात करें आदत की, we are also talking about the requirements that are now evolving. Employers are becoming more and more demanding. That's बिल्कुल true. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली ये बताएं कि कौन से स्किल्स हैं जो कि एक बंदे को डेवलप कर लेने चाहिए
before he or she applies to the accounting analytics program? Skills जो या इंटरव्यू में हम किस बंदे को सिलेक्ट करना पसंद करेंगे? So somebody, I mean, foremost requirement is somebody who can add value to other participants. Any overall richness of the discussion, richness of the discussion, richness of experiences, okay, and also what kind of experience the person has had. So let's say there are two applicants और एक ब्रांच मैनेजर रहे हैं 20 साल बैंक के अंदर, ह्यूज एक्सपीरियंस, बट आई डोंट सी एनी प्रोग्रेशन, versus somebody who has worked for 5 years but has progressed considerably in those 5 years. So wo different kind of experiences. We don't want cogs in the machine. We want people who are able to think and who are able to respond to changes in environment. Okay, bilkul sahi. And which field of work is most suitable after earning a degree in this program? Lucrative is consulting. Because in terms of adaptation of technology in Pakistani industry, and I'm working on it as a research project as well, that's not up to the baseline that other developing countries are at. Even India or Bangladesh, they are far ahead in terms of adaptation of technology in their industry. तो इसमें हमें एक तो obvious choice है कि आप इंडस्ट्री में चले जाएं and you help them transform to a digital environment, but more interestingly it would be quite a few, let's say, big four accounting firms. They have huge consulting arms. The only job they are doing is helping their clients transform from a manual or a legacy ERP to a digital platform where you use the huge amounts of data that is available to make decisions. So it's basically data-driven decision making. Right. One is you go into Nishad and work as a data analytics professional, or you go to KPMG or EY and help several clients do that. So that adds to the richness of your experience and helps in the long run. And what if someone wants to go outside Pakistan? I remember there were so many people who contacted me and they were asking me the same question, we want to pursue the executive MBA program, but we are planning on moving outside Pakistan and probably moving out to another country for good. So the program, the accounting analytics program, do you think it's going to have you skilled in things that are demanded? For sure. And if you look at job sites that advertise jobs in Middle East, for example, जब वो एडवर्टाइज करते हैं अकाउंटिंग प्रोफेशनल के लिए या फाइनेंस प्रोफेशनल के लिए, नाउ द काइंड ऑफ स्किल्स दे रिक्वायर आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे यूज्ड टू बी, क्योंकि टैक्सेशन ऑटोमेट हो गया है, रिपोर्टिंग ऑटोमेट हो गई है, बेसिक बुक कीपिंग ऑटोमेट हो गई है. Based on those, the data that automated system is generating, what kind of helpful information can you produce to help managers make better decisions? अब उनको इस किस्म की, अब वो इवन दे लिस्ट पाइथन और एबिलिटी टू यूज एज ए एडवांस्ड यूजर ऑफ एक्सेल एज अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट विच नेवर वाज बिफोर. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए, आपको विजुअलाइजेशंस आनी चाहिए. ये चीज़ें पहले नहीं होती थी जो अब हैं. सो डेफिनेटली इट वुड बी एन एज, अ ग्रेट एज. एंड इफ़ यू लुक एट यूनिवर्सिटीज़ इन द US, they used to have professional masters in accounting, which is now transforming into professional masters of accounting analytics या finance analytics and so forth. तो वो हर जगह वो traditional accounting education is being replaced by accounting plus technology kind of thing. अच्छा डॉक्टर उमैर, इसके बाद आपसे लास्ट सवाल करूँगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन इसलिए ज़रूरी बिकॉज इट केम फ्रॉम एन इंडस्ट्री प्रोफेशनल. A couple of weeks back, I connected with someone in the telecom sector, and he asked me, this course is basically accounting and analytics. So that person was working for the marketing department within the telecom sector. So क्या accounting and analytics को learn करना is going to help him being a better marketer? Is that possible? For sure. या मेरी डिग्री सिर्फ उस बंदे के लिए बेहतर ही है? नहीं, definitely somebody already working in accounting and finance, उनको kind of edge होगी. ठीक है. लेकिन those people who are not from this background, उनके लिए हम एक foundation course करते हैं अगस्त में, where they are exposed to basics of, for example, accounting, finance, marketing and so forth. तो अगर कोई skills ऐसी हैं जो आप में lack कर रही हैं,
तो वी ट्राई टू कवर देम अप थ्रू दैट प्रोग्राम. लाइक अब आप देखो इन टर्म्स ऑफ HR इवन इंटरव्यूज का ट्रेडिशन ख़त्म होता जा रहा है. You put in the data of the applicant into the AI system. AI सिस्टम आपको मशीन लर्निंग के थ्रू बता देते हैं कि ये गुड मैच है या नहीं है, कहाँ पे पैदा हुआ, कहाँ पे एजुकेशन हासिल की, एंड काइंड ऑफ हॉबीज द पर्सन हैज़. सो आपकी वो टेंडेंसीज बता देता है इसमें आगे क्या करना. बिल्कुल बता देता है. मार्केटिंग में एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहा है एनालिटिक्स. वो अब वो बात ख़त्म हो गई है कि जी ट्रेडिशनल होर्डिंग you do targeted marketing through social media and so forth. हम कह भी रहे होते हैं ना कि मतलब there is no product, you are the product. Of course. तो आपका डेटा कलेक्ट हो रहा है and we are making data driven decision. Right. तो अब वो ख़त्म हो गया. तो अब इसकी एप्लीकेशन हर जगह है, इवन मेडिसिन में है. There is a company in New York that is developing a system where कि अगर न्यूयॉर्क के अंदर कहीं एक्सीडेंट होता है, so closest ER will be alerted. थ्रू द कैमराज दे नाउ नो कि भाई इस किस्म का एक्सीडेंट हुआ है, इस किस्म की केयर उसको ज़रूरत होगी. एम्बुलेंस सर्विस इज अलर्टेड. सो बाय द टाइम द पर्सन इज टेकन टू द ER, the doctors and equipment is ready to treat the person. Exactly. So अब तो this kind of technology और उसका use is in any field at all. Definitely use. Of course, indeed. बिल्कुल सही. डॉक्टर उमैर, लास्ट क्वेश्चन as I committed. अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें जो क्राइटेरिया दैट वी हैव सेट फॉर पीपल हु सीक टू गेट एडमिशन. सो स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया तो यही है 16 years of education. 16 years. Plus some kind of test, either it would be GMAT or GRE or the test conducted by NTS. NTS GAT? GAT. Okay. So any of these is okay. Okay. So this is the strict criteria. Okay. But preference is for people with some exposure to accounting and finance. कुछ courses पढ़े हैं, बेशक BBA marketing किया है, but within that आपने accounting finance के कुछ courses पढ़े होंगे. और कुछ like 4-5 courses भी ठीक है. हाँ, that's fine. That's enough. क्योंकि इस program के अंदर accounting का course as such सिर्फ एक है. That is also accounting and finance combined. So we are not reinventing the wheel. हम दोबारा accounting नहीं पढ़ा रहे. हम application of technology in accounting पढ़ा रहे हैं. So in 9 courses, so there are 3 modules, 9 courses, only one is related to accounting and finance. That too also trying to use technology for financial statement analysis and so forth. तो expectation ये है कि आपका कुछ ना कुछ background हो accounting finance का, कुछ exposure हो. Also preference is experience in the profession. That is definitely helpful. Diversified experience हो तो और बेहतर है. अगर somebody coming from operations or marketing, also valuable. So in the current class we have 3 engineers. उनको हमने foundation course कराए, additional courses कराए to bring them up to mark with accounting and finance people, others. But because they have so much exposure to mathematics and statistics and programming languages, they add a lot of value to the program. अच्छा, ये वैसे अच्छा एक क्वेश्चन निकल सकता है इसमें से कि मतलब वो स्टूडेंट्स या वो प्रोफेशनल्स जो कि मैथमेटिक्स में इतने तेज नहीं हैं, should they be applying to the program? They should, but they'll struggle a little bit. They'll have to work harder. We will help them. Okay. But they'll have to work a little bit harder than those with mathematics and computer science backgrounds. Exactly. And I think every student who would be listening, or every member of LUMS community would be listening to this radio LUMS program today would agree कि LUMS में एक open door policy है with all the professors, regardless of the school that you go to. ये SDSB है, SSC है, HSS है, School of Education है, कोई भी स्कूल ऑफ लॉ है, आप किसी भी प्रोफेसर के पास जा सकते हैं. बिल्कुल, आप ऑडिट कर सकते हैं, कोर्सेज ऑडिट कर सकते हैं. अगर फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर लैंग्वेज का कोई कोर्स करना है, यू कैन ऑडिट दोस कोर्सेज. सो दैट फैसिलिटी इज आल्सो अवेलेबल. एग्जैक्टली. और मैं अपने जो भी हमारे सुनने वाले उनको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो डॉक्टर मैंने जैसे बताया कि रिक्वायरमेंट्स इस प्रोग्राम की क्या हैं. 16 years of education के साथ you will have to appear in one exam, which as he mentioned could be GMAT or GRE, and if you don't want to go for GMAT or GRE, you could opt for NTS GAT, and the last date to take your NTS GAT would be 8th May 2022, and the last date to submit your online application is 17th May 2022, and make sure कि आपके जो supporting documents हैं वो हमारे पास online आ जाने चाहिए by May 20th 2022. Thank you so much, Dr. Omair. आपने टाइम निकाला. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, जैसे आपसे बात भी कर रहा था इस पॉडकास्ट से पहले, कि इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट टाइम ड्यूरिंग द सेमेस्टर और हमारे प्रोग्राम में आने के लिए. नो प्रॉब्लम, ऑलवेज अवेलेबल. थैंक यू अमार फॉर योर हार्ड वर्क, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस.
Thank you so much, Dr. Omair, and many thanks to our audience. It was a great pleasure to be speaking to all of you. I really hope you were able to benefit from the discussion. And if you have any questions, you know where Dr. Omair's office is. Thank you. In addition to that, still, if you need more information, please do visit our website, lums.edu.pk. And if you have any question, please write to us at admissions@lums.edu.pk. And I would also urge you to create your account as soon as you can. And then there's also, this facility, this chat facility that we have enabled. You can, if you have a question, if you're stuck somewhere while you're filling in your online application, you could simply, click on the Ask Admissions button on the application and converse with a member of our team. So thank you very much, and we look forward to evaluating your application. Take good care of yourself. Allah Hafiz. Allah Hafiz.